Let me tell you something interesting about AutoCAD Electrical. No, I am not talking about AutoCAD. It's about AutoCAD Electrical. Maximum people have the myth in their mind AutoCAD and AutoCAD Electrical are both the same thing, but it is not. In this video, we will be going to learn the difference between AutoCAD and AutoCAD Electrical, the technical benefits of the AutoCAD Electrical, the training methodologies of AutoCAD Electrical, and so on. So let's start. Hello everyone, I am Harshal Thakre, Senior Design Engineer, Certified Trainer for AutoCAD Electrical and ETAP. Now, here is the difference. When it comes to creating something by own, definitely it will be going to take more time. Now, the time is very precious nowadays. So we want to focus on only one thing, how we can reduce the time. Here is the first thing which will be going to make a huge difference between AutoCAD and AutoCAD Electrical. That is symbol library. The symbol library which is having a more than 2000 plus symbols which will be going to help to create any kind of design like a normal SLD, schematic designs and so on. What if कि आपके पास वो symbol है ही नहीं, जो library में आपको मिला ही नहीं, then what is the second option? There is one option called as symbol builder in which you can customize the symbol as per your requirement. जैसे ही आपकी requirement होगी, depend on those requirements, you can design proper symbol which will be going to use in the future drawings also. मीन्स आपको एक बार सिंबल बना के रखना है, आइकॉन मेन में पुट कर देना है एंड आप उस पर्टिकुलर सिंबल को नंबर ऑफ टाइम यूज कर सकते हो. सेकंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिपोर्ट, जनरेशन ऑफ द रिपोर्ट. Let's take one example. I am having a circuit of let us say 33 kV substation and in that particular substation हमारे पास बहुत सारे components available होते हैं जैसे fuses, lighting arrestor, transformers, small circuit breakers, some relays, some loads. So how you will be going to define कि इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई है. Definitely you will be needing some report. आपको एक ड्राइंग के साथ साथ एक रिपोर्ट भी रिक्वायर्ड होगी जिससे आपको पता चलेगा कि कितना डिटेल इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है. जो ट्रांसफॉर्मर मैंने यूज़ किया है उसका रेटिंग क्या है, उसकी इस कंपनी का है, उसका क्या इम्पिडेंस वैल्यू है, everything you will be getting in that particular report. आप report generation within a 15 to 20 seconds you will be getting a whole report not only for the single drawing, for the whole project. If in your one project you are having let us say 50 drawings, you will be getting a report of that 50 drawings within a one sheet, which is the biggest advantage of the AutoCAD Electrical. Third point is creating a PLC IO modules. There are so many PLC IO modules available in the industry for the industrial automation. What contribution which is going to make by the AutoCAD Electrical is there are so many PLC IO modules available in the library. आपको directly libraries में symbols मिल जाएंगे. जैसे आपको symbols मिलते हैं वैसे ही आपको similar ways में you will be getting some different kind of PLCs. There are some ABB PLCs, there are some AB PLCs and so many different kinds of PLC you will be getting in that particular AutoCAD Electrical symbol libraries. Fourth point is automatic wire number. Doesn't matter how big your circuit is, आपको जो wire number है वो automatically आपको मिल जाएंगे. Within a single click you will be getting a number of wire number. Doesn't matter, it could be let us say 100 wire number, 200 wire number, 300, doesn't matter. Within a single click you will be getting all the wire numbers in that particular drawing, which is the biggest advantage of using AutoCAD Electrical. And let me tell you one thing also, these things are not possible in AutoCAD. Let me repeat once again, these all things are not possible in AutoCAD. We need to focus on only one thing, that is AutoCAD Electrical, which is going to provide you symbol library, PLC modules, report generation, automatic wire number, panel design. We are having a separate module for the panel design which will be going to provide all the footprints about the circuit breakers, about the push buttons and everything. There will be no need of drawing anything manually. You will be getting all the things in a symbolic manner. Within a seconds you can add those things into that particular drawing and within a second you will be getting that report out of your drawing. You will be getting whole knowledge about what kind of equipment we are using, what is the manufacturer of that particular symbol we have used in that SLD. You will be getting all the things in a SLD. Apart from that, as a human we do number of errors. We have that one thing कि कहीं ना कहीं थोड़ा गड़बड़ी में कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है. So what we can do is हमारे हाथ में क्या है कि उस errors को हम कैसे कम करें. And in AutoCAD Electrical we have some separate thing called as real time error checking, जिसको हम electrical audit भी बोलते हैं. What you will be getting exactly, जैसे अगर आप कोई symbol यूज करते हो उसको अगर प्रॉपर आपने एक लाइन पे नहीं रखा है, लेट अस से कि आपने एक वायर ड्रॉ किया है, उस पर्टिकुलर वायर पे अगर आपने वो सिंबल पुट अप नहीं किया है, इट्स नथिंग बट योर एरर. या फिर हो सकता है कि जो मेरी रिपोर्ट निकलने वाली है विच इज ऑन द बेसिस ऑफ डेटा जो मैंने खुद से गिवन किया है उस सिंगल लाइन ड्राइंग में, अगर वो आप कहीं से भूल जाते हो, अगर आपने लेट अस से कि 100 सिंबल्स यूज किए, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू गो एंड चेक ईच एंड एवरी सिंबल because it's a time consuming process. So here is the option called as electrical audit, which will be going to provide you detailed information what is the error in that particular system.
आपने पूरा स्कीमेटिक निकाला है, आपने पूरा SLD निकाला है, उस पर्टिकुलर SLD में कितने ज़्यादा फॉल्ट्स है, दैट विल बी गोइंग टू मेक अ ह्यूज डिफरेंस। आपको सेपरेट रिपोर्ट मिल जाएगी कि इस पर्टिकुलर सिस्टम में यहाँ पे आपने एक मिस्टेक की है, तो आपको डायरेक्टली आपके मिस्टेक्स भी पता चलेंगे, जहाँ से आपका पूरा का पूरा एंटायर सिस्टम जो है उसको आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। AutoCAD इलेक्ट्रिकल यूज करने वाले इट विल बी गोइंग टू ऑन दिस लेवल, एंड दैट वन थिंग आई वांट एवरीवन शुड लर्न। Here are the so many benefits of using AutoCAD Electrical, which is not practically possible in AutoCAD. So I think you all are must be clear with what is the difference between AutoCAD and AutoCAD Electrical. When it comes to teaching methodology, we as a Livewire team come up with a hybrid model in which you will be getting both the things. You will be some video content as well as डायरेक्ट फेस टू फेस कंटेंट ऑल्सो। वी विल बी टीचिंग यू इन अ बोथ द मैनर। यहाँ पे दोनों भी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। कहीं ना कहीं हमें भी एक चीज़ लगता है कि हमारा जो नॉलेज है वो सभी लोगों तक पहुँचे, एंड देयरफॉर वी आर कम अप विद अ कॉल्ड एज हाइब्रिड सिस्टम। देयर विल बी सम वीडियो नॉलेज ऑल्सो एंड नॉर्मल टीचिंग ऑल्सो। सो आपको दोनों इसका बेनिफिट मिलने वाला है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अ स्पेशली कॉल्ड एज DLM, कॉल्ड एज डीप लर्निंग मॉडल। इसमें आपको इतनी सारी नई चीज़ें मिल जाती है ऑनलाइन आपके मोबाइल पे ही कि आप जो हमसे पढ़ते हैं उससे भी ज़्यादा आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। इफ़ यू वॉन्ट टू attain the demo, the deep demo about everything which I have already told you कि जितने सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं AutoCAD इलेक्ट्रिकल में, अगर इस चीज़ का आपको डेमो चाहिए तो here is the link in the description, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो एंड आपका एनरोल कर सकते हो for the free demo. And I am going to tell you what is the difference between AutoCAD and AutoCAD electrical, all the things in a practical manner, and I will be more happy to tell you about all the differences. So all the best to you guys, and please do registration for your free demo, and I will be more happy to see you there. Thank you so much for watching this video. All the best for your next demo. See you in the demo.